Good morning, everybody. Welcome back to the online channel of economics of GTMI School. Dear students, today we have to start with a new topic, or you can say the most important topic of macroeconomics. Our topic is methods of calculating national income. As we know, perhaps everyone confused for the preparation of economics regarding the chapter methods of calculating national income, how we have to calculate our national income. Dear students, as we discussed in the circular flow of income, there in that topic there were three phases: phase of production, phase of income, and phase of consumption or disposition. On that base, our economics identified the three methods of calculating national income. There are three methods. For calculation of national income. What are they? First, product method or value added method. Second is income method, and third is consumption. Consumption expenditure method, income method, and expenditure. We already discussed why it's so in the circular flow of income in two-sector model. In two-sector model, there is a simplicity because there is no interference of outside. In two-sector model, we divide our entire economy between two sectors only, household and firm. That's why the best simplest technique to understand the calculation of national income by two-sector model. See, product method, income method, and expenditure method means therefore national product equal national income equal national expenditure. As we are aware about the universal concept of economics, one man's expenditure is another man's income. Correlate all three methods. Production is possible by organizing all core factors: land, labor, capital, and entrepreneurship. So whatever the value produced by our farm sector in two-sector model, there is exclusive right with the farm to produce entire goods and services. So what is the product produced by farm sector is equal national product. We are limiting ourselves to two sectors. In two sectors there are household and farm.
firm has exclusive right to produce all the goods and services. So whatever the output produced by entire economy, because there is no role of external, national product. Again, the product of firm sector will be divided among 4 factors, equal of 4 factors: weight plus length plus interest plus profit. Dear must remember that जो output firm sector produce कर रही है, for the production what firm required to manage the services of 4 factors: land, labor, capital and entrepreneurship. तो जितनी आउटपुट फॉर्म ने प्रोड्यूस की उसकी रेम्यूनरेशन और उससे जनरेटेड इनकम विल बी डिवाइडेड अमंग 4 फैक्टर्स. Remuneration of labor is wage, remuneration of land is rent, reward for capital is interest and reward for entrepreneurship is profit. तो जो इनकम यहाँ जनरेशन से is divided into the income, and whatever the income produced by the household, the income किसको earn करना? Household. It's paid by firm to the household. Whatever the income earned by household have only 2 options: consumption expenditure plus investment expenditure. Means equal national expenditure equal national consumption plus national saving or investment. Dear students, in 2 sector model, for any economy to have at equilibrium position, it's compulsorily required to have saving equal investment. तो जितनी सेविंग हो रही है वो इन्वेस्टमेंट में करवा दो. So there are 2 options before the people or household to spend their money. People can spend their money either on consumption expenditure or on investment expenditure. तो आप क्लियर करो, there are 3 methods. Product method can be helpful to calculate the national output or national product. Our national product will be divided in 4 groups. 4 factors: owners of land, owners of labor, owners of entrepreneurship, owners of capital, with respect to wage, rent, interest and profit. And whatever the factor income received by household will be expended on 2 options. One option, consumption expenditure for the purpose of consumption to fulfill their desire, and second, for the investment to get better return in future. Therefore, we can conclude our remark by establishing the strong universal relation: national product equal national income equal national expenditure. It doesn't matter which method we are adopting to calculate our national income. Method कुछ भी होगी, value remains unchanged. It's fixed in all the cases. After that, it's very easy to calculate national income because according to our convenience. कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होगी, मेथड का नाम मेंशन नहीं रहेगा, इट में आस्क टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, मेथड तो लिखा ही नहीं.
On that case, must remember that your convenience is required to address. Whatever the convenience of the student, they can apply to calculate the national income. आप गिवन इंफॉर्मेशन को ठीक से ऑब्जर्व करो और देखो कि किस पर्टिकुलर मेथड के एलिमेंट्स कंप्लीटेड है, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, यू कैन प्रोसीड विद दैट मेथड एंड योर आंसर विल बी ट्रू. So therefore, it doesn't matter which method we are opting to calculate our national income, all will give the same result. So dear student, we have to start with the value added method. हमें start करनी है value added method और product method. There are three methods we already discussed. Right now we have to go through the output method, output product or value added method. As we discussed in the definition of a GDP, gross domestic product. GDP, the sum total GDP MP equal sum total of final goods and services. Sum total of monetary value of final goods and services produced by all economic units within the territory during a financial year. Let us suppose we are calculating our national income at GDP at market price. Whenever you have to calculate national income through the value added, first of all, you should try to calculate GDP MP. After calculation of GDP MP, it will be easier to convert it into the national income. Because in the previous chapter, we already discussed the conversion of method in another method. Means national income and related aggregates we already discussed in previous chapter. Means after having the value of GDP MP, the conversion will be easy. So therefore we have to start with GDP MP. Our GDP MP equals sigma gross value added. Sigma I want to tell GVAI here, GVA, where GVA stands for gross value added and computed by GVA equal value of output minus value of input. Where value of output equal, ध्यान रखो ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे और उससे इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे. सपोज one bakery
purchasing the floor for rupees 1000 and converting it into the bakery of 3000 rupees. क्या कर रहा है बेकरी वाला? 1000 रुपीज़ की फ्लोर परचेज कर रहा है और उसे 3000 की बेकरी में कन्वर्ट कर रहा है. ऑन दैट बेस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बेकरी should be 1000 and value of output will be 3000. तो value added by bakery 3000 minus 1000 equal 2000. हमें वही value add करनी है जिसको प्रोडक्शन यूनिट ने ऐड किया है. सो ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, वेयर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है. सपोज करो हम बेकरी की पैकेट 500 पैकेट बनाती है और 6 रुपीज़ पर पीस सेल करती है. तो 6 रुपीज़ इंटू 500 3000 मीन्स प्राइस पर यूनिट. प्राइस पर unit into quantity produced. Suppose produced quantity is not given. There is other alternatives we have, or the value of output equal sales plus change in stock. डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज इन स्टॉक. अगर वैल्यू प्रोड्यूस नहीं दिया गया है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक पॉसिबल है. इस फिनेंशियल ईयर की इंटायर क्वांटिटी सेल नहीं हुई है या इस फिनेंशियल ईयर की क्वांटिटी प्रोडक्शन से ज़्यादा सेल हो रही है. ऑर्डर एडजस्टमेंट बी रिक्वायर्ड टू एडजस्ट change in stock with the sales to have the value of output, where change in stock equal closing stock minus opening stock. अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया गया है तो चेंज इन स्टॉक के लिए वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट चेंज इन स्टॉक इक्वल क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. अब चेंज इन स्टॉक सपोज करो बेकरी ने 500 पैकेट प्रोड्यूस किया और सेल इस साल 400 ही किया तो उसकी रिमेनिंग चेंज इन स्टॉक में 100 प्लस हो जाएगा. ठीक अपोजिट अगर उसने 500 यूनिट प्रोड्यूस किया और 600 यूनिट सेल किया मीन्स पॉसिबल है कि उसके पास पहले से ओपनिंग स्टॉक ही मोर देन 100 यूनिट बची हुई. फॉर दैट केस वी हैव टू एडजस्ट. हमें केवल विद इन द फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी बिकॉज जो ओपनिंग स्टॉक है फॉर्म के पास वो प्रीवियस ईयर की स्टॉक है. वेन एवर द वैल्यू प्रोड्यूस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर. क्योंकि वो प्रोडक्ट पिछले साल की है तो पिछले साल जब प्रोडक्शन हुई थी उसकी काउंटिंग और कैलकुलेशन हो चुकी थी. नो नीड टू कैलकुलेट अगेन. अगर बार बार कैलकुलेट करेंगे वी कैन मिस्टेक द डबल काउंटिंग. हम लोग एक ही प्रोडक्ट को बार बार काउंट करेंगे तो हम लोग उसको डबल और मल्टीपल करते जाएंगे
So therefore, we are discussing about the value added. Here value added equal value of output minus value of input. Where value of output can be calculated equal price per unit into quantity produced, or sales plus change in stock, where change in stock equals closing stock and my opening stock. After GVA, what are the other notations? Clear the meaning of other notations also. Here, I stands for one to n economic unit involved in the process of production. में जितनी भी यूनिट इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, if we wish to count the number of economic units operating within the territory of our country, like India, you may found it's millions of, or you can say billions of. मीन्स इंडिया में केवल प्राइमरी सेक्टर में आप जाओगे करोड़ों फार्मर्स मिल जाएंगे. इसमें 20, 25, 30 crore farmers may available to produce the goods in the primary sector, in their farm field. तो जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट होगी सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे टू गेट सम टोटल. सो the sigma used for summation. It's used for summation sum. Up you can simplify. It's sum total of the value added by 1 to n economic units operating within the territory during a financial year. जितनी यूनिट्स होगी उतनी वैल्यू ऐड की जाएगी, सबकी अलग अलग कैलकुलेट होगी. फॉर सिंप्लीफिकेशन लेट अस सपोज लेट there are 3 units in the economy. Namely, P for primary sector, S for P, primary sector, notation in P. Secondary sector, notation S. And tertiary sector denoted by T. For simplification, suppose we assume that only there are 3 operating units in the economy. 1 in the primary sector, 1 in the secondary and 1 in the tertiary sector. केवल 3 ही इकोनॉमिक यूनिट है. In other words, you can say entire units in primary sector included in 1 unit.
which is represented by P, and entire production unit in secondary is represented by S. Entire units in tertiary is represented by T. If we have only 3 sectors, all 3 units, you can expand your formula. Our formula should be GVA I equal gross value added by primary plus gross value added by secondary plus gross value added by tertiary. Here, where I stands for 1, 2, 3 units. 1, 2, and 3. There are 3 units only. First represented by P, second represented by S, and third represented by T. Equal GDP-LP. Dear students, must remember that sometimes students may confuse regarding the calculation of GDP-MP or gross value added. But see the relation here, GVA exactly equal GDP-MP. अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड हमने निकाल लिया है तो दोबारा GDP-MP कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. बोथ आर द सेम. If it is asked to calculate GDP-MP, calculate GDP-MP, otherwise go through the GVA. Both are the same. After getting the value of GDP-MP, what our ultimate goal? To calculate national इनकम इक्वल. अब वैल्यू हमने GDP-MP कैलकुलेट कर लिया है और कैलकुलेट करने में नेशनल इनकम फ्रॉम GDP-MP because in the first step we calculated the GDP-MP through the value added method. जब भी वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करेंगे तो first of all we have to calculate GDP-MP. After that, GDP-MP converted into the NNP-FC, national income. See the conversion, national income, that is NNP-FC. It's national income. याद रखो कि convert किससे करना? From GDP-MP. GDP-MP. See the adjustment. क्या क्या adjust करनी है? First letter N and G. G stands for gross. Gross को convert करनी है net में minus depreciation. First letter का adjustment हो चुका है. Gross को net में convert करने के लिए depreciation minus करेंगे. Go for the second letter. Here D, domestic, and here N, national. डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. थर्ड लेटर FC, MP. MP से FC कैलकुलेट करेंगे माइनस NIT. Means after getting the value of GDP-MP, you have to go through the formula for converting GDP-MP into the NNP-FC. For NNP-FC, what are the requirements? First,
depreciation subtracted from GDP MP, NFIA added to the GDP MP, and NIT subtracted from GDP MP. After that, we will get the value of NNPFC or national income. So, to calculate national income through value added method, first of all, we have to calculate GDP-MP. It's simple for calculate. After having the value of GDP-MP, we can easily convert it into the national income or any other related elements. Dear students, our next topic related with the precautions. Precautions required to maintain for the calculation of national income. Precautions regarding the value added method. This is the most important topic. Without taking proper care, proper precautions, we may not able to calculate our national income exactly. To avoid the double counting, must remember that सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अराइज होती है regarding the mistake of double counting. वैल्यू एडेड मेथड में डाउट रहती है कि हम डबलिंग कर लेंगे, एक ही प्रोडक्ट की बार बार काउंटिंग कर लेंगे. तो हमें फर्स्ट क्या करना है? अवॉइडिंग डबल काउंटिंग. अवॉइड डबल काउंटिंग. Dear student, through the value, so product method, there are two options we have. One is the final output method, or second is value added. Dear students, to avoid the mistake of double counting, हमारे पास दो ऑप्शन है अंडर द वैल्यू एडेड. कोई एक अप्लाई करेंगे, हम लोग काउंटिंग डबल नहीं करेंगे. द फर्स्ट ऑप्शन hidden in the definition of GDP. What the definition is? Sum total of monetary values of all the final goods and services. Here I am using the term final output method. मीन अगर डबल काउंटिंग से बचनी है तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करनी है. वी हैव टू अवॉइड द इंक्लूजन ऑफ इंटरमीडिएट. वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली. अगर हमने पहले ही सारे प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट और फाइनल में डिवाइड कर लिया, इट विल बी इजियर. और केवल फाइनल गुड्स को हमने कंसीडर किया, वी कैनॉट मेक एनी मिस्टेक. सेकेंड ऑप्शन, द वैल्यू एडेड, विच ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट. You can understand it through a particular example. Okay, listen the examples. See the example.
for the calculation and illustration. First, value of output, value of input, and value added. Everything is given in rupees. Everything given, sorry, all the values are given in rupees. See the steps. We discussed in the starting of the topic of a bakery. See the phase of production of any product from bakery. First, farmer involved in the production of wheat. Second, the flour mill convert the wheat of farmer into the flour. And third, flour can be converted into the bakery by the baker, and ultimately the shopkeeper who has to sell the product to the ultimate consumer. Okay. Suppose the value produced by farmer is of 600 and value of input used by the farmer is 200. So what value added? It's value of output minus value of input equal value added. Suppose entire wheat is purchased by the flour mill. क्या करना? Entire wheat produced by the farmer is purchased by flour mill. Means input कितना हो जाएगा? 600. Farmer had to sell his or her wheat of 600 to the flour mill, and flour mill is converting the value of 600 into the 800. Means the value added by the flour mill is 800 minus 600 equal 200. Again, suppose entire flour is sold by the flour mill to the bakery, and baker converting into the 1000 rupees. The value added by bakery should be 200, and again level of shopkeeper. Shopkeeper को क्या चाहिए? अपनी प्रॉफिट मार्जिन. Suppose entire products of baker purchased by shopkeeper and sold it at rupees 1200. Therefore, the value added by farmer, the shopkeeper, is 1200 minus 1000 equal to get the sum total. See the total product. अगर केवल वैल्यू ऑफ आउटपुट विदाउट इग्नोरिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग डिस्कस करते हैं, तो 600 प्लस 800 1400
plus 1000, 2400 plus 12,000, 3,600. Value of input 2 plus 6, 8 plus 8, 16 plus 10, 2,600, and value added equal 1 is equal GVA or GDP MP. अब आप देखो देयर आर टू अप्रोच. वन अप्रोच हमें आउटपुट इनपुट को इग्नोर करनी है. ओनली वी हैव टू एडजस्ट द वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी यूनिट्स हु आर इंडल्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अगर ऐसा करते हैं तो हमें कॉलम 1 और 2 को इग्नोर करनी है. वी हैव टू add the value under the third column is the value added by each and every economic units is equal 1000. Our GBA or GDP MP should be 1000. But this is the method of value added. Second or final output method. See the concept. Or sum total of value of output 3,600, sum total of input 2,600, value of output minus value of input equal value added 1,000. What we discussed? Final output method. Final output method means our entire value what we are calculating is 1,000 rupees. Means initially see the 200 rupees input is already available in our economy at the time of process of production started by farmers. चूँकि फार्मर्स ने 200 रुपया इन्वेस्ट कर रखी है जो पहले से प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग की पार्ट रही है. एंड राइट नाउ द अल्टीमेट सेल इज ऑफ 1200. तो 1200 की अल्टीमेट सेल है जिसमें 200 रुपये पहले से ही हमारे पास थी. अब कितनी आ रही है? 1200 माइनस 200. जो 200 पहले से स्टॉक में था वो हमारा पिछले साल का इनकम है. 1200 से 200 माइनस कर देंगे 1000. तो बाई अप्लाइंग बोथ द मेथड फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड वी विल गेट द सेम वैल्यू. आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड. देयरफॉर बोथ द ऑप्शन इज एप्लीकेबल to calculate national income. Say the all precautions what we have to care about in the process of calculation of national income. Say the other precautions we have to consider while calculating our national income. Only the precaution sale and purchase of second hand goods are not included. Here is whenever you have to calculate. याद रखोगे जो भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की सेलिंग और परचेजिंग है उसे ऐड नहीं करनी. क्यों नहीं करनी? प्रोडक्ट सेकेंड हैंड है. जब वो फर्स्ट हैंड बनाई गई थी एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ दैट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड. कमीशन बट इफ द कमीशन commission
charge by agent by sales agent for selling second-hand goods. Goods is included. सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, लेकिन अगर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी कमीशन एजेंट ने उस पर अपना कमीशन फिक्स कर रखा है, दैट कमीशन शुड बी एडेड टू द नेशनल इनकम बिकॉज कमीशन अर्न्ड बाय एजेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। प्रोडक्ट पिछले साल की है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की है, बट कमीशन करेंट ईयर। थर्ड, ओन अकाउंट प्रोडक्शन। Own account production of goods of the producing sector. Own account production of goods of the producing sector. Must be included. अगर एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोडक्ट खुद बना रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है, सपोज एनी ऑटोमोबाइल फर्म आर प्रोड्यूसिंग द ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट यूज्ड बाय देयर ओन मैनेजर्स फॉर ओन पर्पस, it must be included in the GDP and pure national income. Production of self-consumption. Production of self-consumption. For self-consumption. Of goods are included in कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ऐसी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर खुद कंज्यूम कर जाते हैं, पर्पस क्या है? सेल्फ कंजम्पशन। इंडिया के मैक्सिमम फार्मर जो स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी के होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट खुद कंज्यूम कर जाते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बिकॉज उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू उससे मार्केट में सेल और परचेज की जा सकती, बट इट्स रिक्वायर्ड बाय प्रोड्यूसर इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट्स मस्ट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन not included in national income. Value of services, value of services for self-consumption are not included. Value of services for self-consumption means value of services for self-consumption means
the services of housewives, services of family members for the benefit or satisfaction of their own family members, which are not associated with any market value, is not considered while calculating the national income. And the rate of imputed, not rent, imputed rent of own buildings must be included in national income. So, this is the last precaution under the value added method. Imputed rent of owners building. अगर एक कंपनी, एक फॉर्म खुद के बिल्डिंग में प्रोडक्शन यूनिट ऑपरेट कर रही है, in that case the rent of that building must be included while calculating the national income. तो याद रखोगे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करनी, एक्सक्लूड कर देनी है. सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की वैल्यू एक्सक्लूड करनी, इंक्लूड नहीं करनी है. अगर कमीशन चार्ज हो रही हो सेकेंड हैंड टू सेल द सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, इट मस्ट बी इंक्लूडेड while calculating the national income. Product for self-consumption by farmer as well as producer must be included in calculation of national income, but the value of services produced for self-consumption is not included. Okay, after that it's very easy to calculate the national income without any mistake. After caring about these precautions, you may able to calculate your national income without any error. So, dear student, thanks for today. We'll meet in the next class with the next topic, that is income method. Thanks all.